Okay, guys, good afternoon to all of you. Before going to start the session, we go through some poll technical check. Please answer me in poll. A student who joined from the YouTube live, they can answer me in chat box of YouTube. Am I audible clearly and screen is visible to you properly? Please answer. Okay, guys. So today we will going to discuss about the in detail about male reproductive part, as well as we're going to discuss about the start of female reproductive part. Okay. So before going to start the session, what we learn up to the last session, we go through some revision. So we learn about the three covering of testes. Okay. And that three covering is known as three covering के बारे में हमने देखा था in last session, and that three covering is they have different names. Okay. For example, first covering is a tunica vaginalis. Okay. Or vaginalis. ठीक है. So it is a tunica vaginalis. Okay, and it is the outer covering. ठीक है, ये कैसा रहेगा? outer covering. In second, that is a middle covering. It is known as a tunica albuginea. ठीक है, tunica albuginea. ठीक है, that is a middle covering. And last covering, that is inner covering, is known as a tunica vasculosa. ठीक है, so that the thing, tunica vasculosa. Okay, that the thing we already discussed in the last session. Okay, so we go through some revision, and after that we will start the session. Okay, next we discuss about the different part. Okay, and in this part we discuss about the compartments, that is testicular lobules. So we discuss about testicular lobules, so where it's situated. ठीक है, so you can see these are the different compartment and it known as the lobules, testicular lobules. ठीक है, तो ये compartment रहेगा, that thing is known as the testicular lobule, and it is the 150 in number, up to the 150 in each testis. ठीक है, कितना रहेगा एक testis के अंदर? 150 के आसपास. Okay, you can see here that is a seminiferous tubules. So this is a coil structure. It is known as a seminiferous tubule. Okay, that thing is known as a seminiferous tubule. Each compartment contains the seminiferous tubule. You can see this is the rated testis. We already discussed this rated testis. Okay, that is it is a network of tubules. Okay, that thing is known as a rated testis. Okay. Next thing we discuss about the Vasa efferentia. This portion is the Vasa efferentia, that is a VE. I am right here, and this portion is known as the epididymis. Okay, this portion known as the epididymis. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? epididymis. ठीक है. So what is the function of epididymis, guys? We already discussed. So epididymis is important for the nutrition and store of the sperm. Okay, so coming to the next, guys, then what is the seminiferous tubule? So it is developed, or it made from
Okay, it made from seminiferous tubule made from the cuboidal germinal epithelium. Okay, it is made from the cuboidal germinal epithelium. ठीक है, चलिए, germinal epithelium. ठीक है, चलिए. Next thing about the seminiferous tubule, it important for development of the spermatid. Okay, we already discussed it. Spermatids. Okay. Next, it have a Sertoli cells. Okay, and Sertoli cell is important to provide a nutrition to sperm. ठीक है. Again, Sertoli cell is important to secretion of ABP. ठीक है. And inhibin, we already discussed that thing about the seminiferous tubule. About epididymis, we discussed the three part of epididymis, that is a head. Okay, next is a body part, and the last part is the tail part. Okay, then what is a mean by head of epididymis? Head किसे कहेंगे हम? That is a capute epididymis. Okay, so I am right here, that is a capute epididymis. In case of body, it known as the carpus epididymis. Okay, in case of tail, it is known as the cauda. Okay, so that all the epididymis here. ठीक है, चलिए. Next thing we discuss about the function of epididymis, that is a nutrition and storing of sperm. That is the function of epididymis. चलिए, coming to the next is a Vasa deferentia. So Vasa deferentia, it is a tube-like structure. You can see here, this is a Vasa deferens. Okay, and this tube-like structure is useful to transport a sperm cell up to the ejaculatory glands. मतलब ejaculatory gland तक ये sperm को क्या लेके जाएगा खुद के साथ में. ठीक है. And it start from the cauda. Okay, and it have a 2 in number actually. ठीक है, ये कितना नंबर में रहेगा? 2 in number. Okay, and it make a loop around the urinary bladder. ठीक है. So that thing want to remember from this portion. Okay, चलिए, coming to the next guys. Next thing is a ejaculatory duct. Okay, and ejaculatory duct pass through the prostate gland. We discuss about the prostate also. ठीक है, if I think we not discussed completely, we will discuss it. ठीक है, about the prostate. ठीक है, but just I am right here. The ejaculatory duct pass through the prostate. Okay guys, चलिए. And it is important for to eject sperm. ये किसके लिए जरूरी रहेगा? स्पर्म को इजेक्ट करने के लिए. स्पर्म इजेक्ट sperm. Okay, चलिए, coming to the next guys. Next thing we discuss about the urethra. Okay, then what is mean by or we can say semen, not only sperm, that is a complete semen. Okay, chaliye. Next, we discuss the different 3 part also in urethra. ठीक है, 3 part हमने यहाँ पर discuss किए थे. ठीक है, that is a penile urethra, next is a prostatic urethra, next is a membranous urethra. You can see here, यहाँ पर हमें दिख सकते हैं, that is a prostatic urethra. Sorry, this is a penile urethra. Okay, and this is a membranous urethra. Okay, and we discussed the 2 type of sphincter, that is internal sphincter. Internal sphincter you can see here. Okay, this thing is known as the internal sphincter. Okay, ये हो गया internal sphincter. And the nature of internal sphincter is a involuntary. So please remember, in here
and involuntary here. ठीक है. So which sphincter is involuntary? That is a internal sphincter. Please remember the word in. मतलब in अगर ध्यान में रहता है हमें तो ये अपने आप ध्यान में रह जाएगा. In means involuntary. ठीक है. That is a common thing in both involuntary and internal. You can see the external sphincter here, and this external sphincter is the voluntary. ठीक है. ये कैसा रहेगा? Voluntary. So that the thing we already discussed in the last session. Okay, coming to the next. So we discuss detail about the penis. Okay, so penis is the external genitalia. ठीक है. Penis is the external genitalia. Okay, that important for transport of sperm toward the female vaginal, we can say tube. Okay, or vaginal way. Okay, so that is the work of penis. Okay, and we discuss the different tissues structure inside the penis, and there have two tissues structure there have a different number present in. Okay, for example, when we discuss about the tissue structure, we discuss the two number of carpus cavernosum. ठीक है, sorry, carpus cavernosum. ठीक है, चलिए. And this two cavernosum you can see here. Okay. And next is the carpus spongiosum. Okay. One, that is, this is a number of carpus spongiosum. Okay. Okay, guys. And this carpus spongiosum contain urethra. ठीक है. इसके अंदर ही क्या रहेगा? यूरेथ्रा रहेगा. That's why you want to remember this name, because it is a very important question may ask where is urethra present, then इसका नाम हमें पता होना चाहिए. ठीक है. That is the important thing from this slide. Okay, चलिए. So is it clear to all, guys? If it clear, click on thumb. Okay, or click on yes. If you have any type of issue, any type of doubt, you can ask me. चलिए. Okay. I think it is clear to all. Okay, chaliye. So this is the whole revision from the last session. Chaliye. So coming to the next, guys, and next is a question, and question on your screen: removal of foreskin, not a screen, is known as vasectomy, circumcision, tubectomy, prepuce frenulum. Okay, and I'm launching poll for you guys. Please answer fast. Actually, this is a very easy question. Students who attend from the YouTube, they can answer in chat box. Other people can answer in poll. Correct. Akshita, correct. Namma. Bhavna, correct. Kartik Patil, correct. Janvi Sangli, correct. Good afternoon, Naveen. Okay, chaliye. So I am end this question,
and this is your result. Here maximum people choose an option B. Obviously it is correct option. Okay, then option, why option B is a correct? So what is mean by vasectomy? Vasectomy का मतलब क्या होता है? It is the cutting of vas deferens. ठीक है, so I am right here, cut vas deferens. Okay, then what is mean by tubectomy, guys? So it is nothing but the cutting of we can say fallopian tube. Okay, cutting of fallopian tube. ठीक है. Next, prepuce frenulum. It is a one type of skin structure who attach to the glans penis. That thing is known as a prepuce frenulum. Okay, that's why these three options are not the answer. Okay, then what is mean by cutting of vas deferens? Actually, vas deferens cutting and fallopian tube cutting, it is important for the we can say family planning process, or we can say it is important for to avoid we can say pregnancy. ठीक है, उसके लिए ये प्रोसीजर होता है. we will discuss it in next lesson about it. ठीक है, so don't worry about it. ठीक है, चलिए. हाँ, we can say it is one of sterilization process. ठीक है, चलिए. So that's why option B is the correct option. That is circumcision. It is the process of removal of foreskin. ठीक है, coming to the next, guys. Sertoli cells are found in ovaries and secrete progesterone, adrenal cortex and secrete adrenaline, seminiferous tubule and provide nutrition to germ cell, pancreas and secrete cholecystokinin. Okay, I'm launching the poll for you. चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका. करेक्ट जेनवी सांगली. ओके, करेक्ट हर्षा, करेक्ट भावना, करेक्ट जैनवी मांड्या, करेक्ट जैनवी बेलगावी. Okay, only 10 seconds are left, guys. Please answer fast. Okay, guys, so I'm end this poll and result on your screen. So maximum people, that is 100% people, choose an option C. Obviously it is correct option. I think the it not a need to explain it because everyone know about it. ठीक है, सभी को पता है इसका आंसर क्यों ये है. ठीक है, so Sertoli cell are found in a seminiferous tubule. Actually Sertoli cell is the part of seminiferous tubule and it provides the nutrition to the germ cell. We already discussed this thing, okay, in the revision. Okay, so coming to the next, guys, next thing we already discussed about this slide. Okay, this is a flow chart of transport of sperm. Start from the seminiferous tubule, it come toward the retetestil, after that vas deferentia, after that epididymis, after it transport from the vas deferens and it go toward the ejaculatory duct, after that urethra, and it release from the urethral meatus. Okay, so this thing we already discussed in the last session. We going to discuss in today's session about a different accessory glands. Accessory glands के बारे में हमें जो है ये सेशन के अंदर देखना है. ठीक है, then what is mean by glands, guys? We already discussed about the glands. Glands are the some type of duct which secrete something. मतलब जो कुछ ना कुछ क्या कर रहा है वहां पर secrete कर रहा है. That thing is known as the glands. उसे हम कहते हैं
glands. ठीक है, चलिए. So let's start from the first gland, that is a seminal vesicle. Okay, so guys, seminal vesicle produce alkaline secretion. Then what is mean by alkaline secretion again? So here alkaline secretion means basic in nature. Actually it is the basic in nature. You can see the pH of seminal fluid, that is a 7.4, and maximum amount of semen contain a seminal fluid. मतलब seminal vesicle, a thing which released by the seminal vesicle, that is known as a seminal fluid, and that seminal fluid is a more proportion in the semen, that is a 60%, up to the 60%. कितना परसेंट रहेगा? 60%. ठीक है, you can see here. Then my question to you guys, why it have a alkaline secretion? ये alkaline secretion क्यों रहता है? Please answer fast. चलिए, answer in chat box. Why it have a alkaline secretion? चलिए, ओके, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके. नो जेनवी सांगली, नो जेनवी YDG, आई थिंक इट इज अ जेनवी यादगीर. ठीक है, चलिए, और किसी का आंसर मिल सकता है मुझे? ठीक है, चलिए, चलिए, मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी. ठीक है, एक्चुअली गाइज, इफ वी talk about the vaginal way, okay, where copulation happen, ठीक है, that vaginal tube or vaginal way is the acidic in nature. Okay guys, ठीक है, vaginal way or vaginal tube, we can say it is the acidic in nature. Okay, then why vaginal tube? Vaginal tube means the outer part of the female reproductive part is known as the vulva, okay, and inner part is known as the female reproductive inner part. It have a different part. For example, it have a uterus, okay, it have a cervix, okay, or cervix, whatever you say, okay. From the vulva to cervix, okay, there have a tube like structure, and in this tube penis get inserted. इस ट्यूब के अंदर क्या होता है? पेनिस इंसर्ट होता है, and that tube have a acidic in nature. Then why vaginal way or vaginal tube acidic in nature? ये क्यों acidic in nature होगा? Because vagina और vulva in open in nature. ठीक है, ये कैसा रहता है? ओपन रहता है, and that's why it want to avoid the bacterial infection in it, and that's why the vaginal way is the acidic. Okay guys, clear? चलिए, अब दूसरा चीज, why then seminal vesicle is a basic? Because you know sperm cell is a one type of cell, and it we can say sensitive to the acid. ठीक है, ये कैसा रहेगा? एसिड के साथ sensitive रहेगा, and that's why we want to neutralize this acidic medium inside the vagina. मतलब जो vagina के अंदर acidic medium है उसको क्या करना पड़ेगा? First of all we want to neutralize it, and that's why semen have a basic in nature. समझ में आ गया कि नहीं? और seminal fluid have a basic in nature. That's why it neutralize the vaginal way, and easily sperm can pass from the vaginal way. Okay, that is the reason behind it. Okay, clear guys? चलिए, next point. Next is it contain a fructose. Then why it contain a fructose? Because it give the energy to the sperm. ठीक है, fructose क्या करेंगे? Fructose break down and give the energy to the sperm. Next thing, it contain one of hormone that known as the prostaglandins. Okay guys, then what is the function of
प्रोस्टाग्लैंडिन, ओके ओके नम्मा, डोंट वरी, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन? प्रोस्टाग्लैंडिन का कोई फंक्शन बता पाएगा मुझे? एनीबडी? एनीबडी नो अबाउट द प्रोस्टाग्लैंडिन? ओके, so guys, prostaglandin is the one of hormone which use, or we can say it is a one of chemical, ठीक है, don't worry, हार्मोन भी है, केमिकल भी है, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। सो इट इज यूज फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस, ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। देन व्हाई वी वांट टू कॉन्ट्रैक्ट यूटेरिन, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म और सीमन, तब हमें ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना है? बिकॉज देयर हैव लॉन्ग वे और लॉन्ग डिस्टेंस वांट टू ट्रैवल, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस वांट टू ट्रैवल टू द सीमन और स्पर्म सेल, स्पर्म सेल को है ना बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई इफ द यूटेरिन वॉल कॉन्ट्रैक्टेड द डिस्टेंस गेट वी कैन से लेस, और वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, इट गेट डाउन, ठीक है, वो थोड़ा कम हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट कंटेन अ प्रोस्टाग्लैंडिन। दैट मींस इसका ही मतलब ये होता है प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प टू द स्पर्म फॉर देयर ट्रैवलिंग, ठीक है, और वी कैन से प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प टू द स्पर्म टू देयर मोटेलिटी, ठीक है, दैट मींस प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज मोटेलिटी, ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है हमने अभी अभी डिस्कस किया है, एंड इट आल्सो इंक्रीज द पेनिट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, ठीक है, पेनिट्रेशन कैपेसिटी को भी ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट थिंग इज अ क्लॉटिंग फैक्टर गाइस, सो वन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नेम एज फाइब्रिनोजेन, प्लीज रिमेंबर द नेम, आई एम राइट हियर, fibrinogen, okay, then this fibrinogen is important to coagulation of semen. Then why we want to coagulate semen inside the vaginal area, or we can say inside the uterine, हम इसको coagulate क्यों करना चाहते? if it not coagulate, जो sperm है, sperm जो है it flow backward, okay, and that's why it important for the, और वी कैन से इट वांट टू कोएगुलेट, ठीक है, मतलब उसको कोएगुलेट होना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन सी द अल्कलाइन नेचर हेल्प इन न्यूट्रलाइज, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट, सो नो नीड टू डिस्कस इट, ठीक है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट गाइज, ठीक है, सो यू कैन सी द सेमिनल वेसिकल हियर, दिस इज अ सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स आर 2 इन नंबर, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ये मतलब कॉमन सी चीज है, ध्यान में रहनी ही चाहिए, ठीक है। And you can see this is a seminal vesicle, and it provides the seminal fluid that is a 60% of we can say proportion of semen, semen का 50% 60% ये रहेगा, sorry not of 50 60%, ठीक है। चलिए coming to the next is a prostate gland, you can see here prostate gland, okay, this is a prostate part, prostate is a very important part again, okay, देन अगेन इसके फंक्शंस देखते हैं हम क्या है, अरे कहा गया प्रोस्टेट, चलिए, सो इट लोकेट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर, ओके, दिस कंप्लीट पोर्शन इज अ यूरिनरी ब्लैडर, ये जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, चलिए, हाँ, दिस पोर्शन इज अ यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द प्रोस्टेट, ठीक है, ये क्या है, प्रोस्टेट है, ठीक है। then chaliye, so it secretes slightly acidic prostatic fluid, okay, and that prostatic fluid is a milky and thick and sticky jelly like material, and pH of this prostatic fluid is a 6.5, kitna pH hai, 6.5, and that's why it is a acidic nature. Again, a main reason behind the acidic nature of prostatic fluid is it contain the citric acid, क्या contain करता है, citric acid, that's why it is a acidic in nature, and up to 25 to 30% it proportion or it contain by the semen, मतलब इतना परसेंटेज जो है वो सीमन इसको कंटेन करेगा, ठीक है। अगेन it contain a citric acid, okay, it contain a calcium phosphate
enzyme like amylase, pepsinogen, next is a clotting enzyme, and profibrinolysin. Actually, profibrinolysin is a one of anticoagulant. Okay, we already discussed one coagulant in the last slide, that is a fibrinogen. Fibrinogen के बारे में हमने पढ़ा है, that is a coagulation factor. Then why we need the profibrinolysin? Profibrinolysin, that is anticoagulant का काम क्या है यहाँ पर फिर guys? So इसके पीछे भी एक रीजन है छोटा सा. We already discussed seminal vesicle contain clotting factor, that is coagulation factors. Okay, that is a fibrinogen. So this thing, that is a profibrinolysin, it is an anticoagulant. That means it opposite to coagulation factor. ठीक है, coagulation factor के ये opposite हो गया, and that's why sperm, or we can say semen, ठीक है, not a sperm, semen, complete whole semen stay in a liquid. Okay, stay in a liquid medium. ठीक है, वो liquid medium में रहेगा due to this anticoagulant. Okay, if it contain only coagulant, then it not easy to ejaculate. ठीक है, वो easily ejaculate नहीं होता, and that's why it also contain the anticoagulant. और इसके वजह से prostate gland या prostate और prostatic fluid contain the anticoagulant. Okay, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए. So it help to activation of sperm, as well as it provide the nutritional value. For example, citric acid, amylase. Amylase actually one of enzyme. ठीक है, जो क्या करेगा, जो हमारा अमाइलेज जो रहेगा उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई this portion is a energetic portion, मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड करने वाला पोर्शन. दैट्स व्हाई इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन आल्सो, मतलब ये क्या करता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है. ओके गाइस, इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर? क्लिक ऑन यस, क्लिक ऑन थंब इफ इट क्लियर. करेक्ट, इंजमामुल. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके गाइस, सो कमिंग टू द नेक्स्ट ग्लैंड. हाँ, यू कैन सी इन दिस डायग्राम अगेन, ये डायग्राम में देखने को मिल सकता है आपको. यू कैन सी हियर दैट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड. दिस इज अ कंप्लीट प्रोस्टेट ग्लैंड. दिस इज अ बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड, यू कैन सी हियर. ठीक है, यहाँ पर बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड जो है हमें देखने को मिल रहा है. दिस इज अ वासा डिफरेंस. ओके, दिस इज अ सेमिनल वेसिकल्स. ठीक है, दिस इज अ लेफ्ट, दिस इज अ राइट साइड सेमिनल वेसिकल. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट गाइज. Next thing is the bulbourethral gland, or it also known as the Cowper's gland. ठीक है, इसे हम कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं और bulbourethral gland भी कहते हैं. Then why it known as a Cowper gland? So there have one anatomist, एक anatomist था, one of English anatomist. 1 minute. English anatomist. Okay, and the name of anatomist is a William Cowper. William Cowper, and that's why it is known as a Cowper gland. इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हम, Cowper gland, because he discovered the functions of it, he discovered the structure of it. ठीक है, that's why. चलिए, so this Cowper gland secrete some of alkaline fluid. Again, it secrete some of a basic fluid, and this secretion happen before ejaculation. ठीक है, and that also known as pre-ejaculatory liquid. इसे हम क्या कहते हैं, pre-ejaculatory liquid.
देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्री इजैक्यूलेटेड लिक्विड, मतलब स्पर्म आने के पहले, बिफोर कमिंग और ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, this liquid secreted. So actually the male urethra have again somehow basic in nature. The way of urethra is a basic in nature. ये जो urethra हमें देखने को मिल रहा है या यहाँ पर हमें, ठीक है, that is somehow basic in nature, sorry, acidic in nature, sorry, not a basic, this urethra is a acidic in nature. That's why this bulbourethral gland secrete some alkaline liquid, okay, to neutralize this way. ठीक है, ये न्यूट्रलाइज करने के लिए काम में आता है. Again, this mucus or the liquid which secreted by the bulbourethral gland, it act as a lubricant. Okay, it act as a lubricant to avoid friction during copulation. ठीक है, it act as a lubricant. ठीक है, lubricant जैसा काम करेगा. ठीक है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी रहता है उस समय जो है फ्रिक्शन नहीं होने देता बिटवीन वजाइनल वे एंड द पेनिस. ओके, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ bulbourethral gland, और यही फंक्शन है उसका. अगेन इट वी कैन से रिड्यूस द स्पर्म डैमेज. ठीक है, ये क्या करेगा, स्पर्म डैमेज को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, स्पर्म डैमेज को नहीं होने देगा. ठीक है, सो दैट इज द फंक्शंस ऑफ द bulbourethral gland. ओके, सो वी डिस्कस द थ्री डिफरेंट ग्लैंड्स हियर, bulbourethral, प्रोस्टेट ग्लैंड, नेक्स्ट इज अ सेमिनल वेसिकल. चलिए अब थोड़ा सा इसको फटफट रिवाइज कर लेते हैं बिल्कुल फास्ट में. सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट सेमिनल वेसिकल. प्लीज listen carefully. Okay, seminal vesicle is the basic in nature. Okay, and it 60% volume of the semen. Okay, complete semen. Why it basic in nature? Because we already know vaginal tube is acidic in nature and we want to neutralize it before ejaculation. ठीक है, हमें sorry, before ejaculation in the sense we want to neutralize it because we want to transport the sperm from the vaginal way. That's why it contain a fructose, fructose for the energy, prostaglandin for the motility and penetration capacity of the sperm cell. So it contains some of clotting factor. Clotting factor is known as a fibrinogen, and it important for the semen coagulation. Okay, next thing we discuss about the prostate gland. Prostate gland locate below the urinary bladder. It has some type of milky, sticky, thick, jelly-like fluid. It have an acidic in nature. The pH of prostate or prostatic fluid is a 6.5, and it form 25 to 30% of semen. It contains citric acid, calcium, phosphate, enzyme like amylase, pepsinogen, and clotting enzyme. Sorry, that is a not a clotting enzyme. That is a anticoagulant, and that anticoagulant is known as the profibrinolysin. Okay, and it important for the nutritive, or we can say it important for the activation of sperm after ejaculation. Okay, so this is the prostate gland. After that, we discuss about bulbourethral gland. Bulbourethral gland, it also known as Cowper gland. Why it known as Cowper gland? Because there are one anatomist, that is William Cowper, who discover or who analyze the function of bulbourethral gland. That's why. So it pre-ejaculatory gland or pre-ejaculatory secretions. Why pre-ejaculatory secretion important? Because again the penile urethra have acidic in nature, or the way or tube is acidic in nature, and that's why it want to neutralize it. Again, the next function, it act as a lubricant. ठीक है, during copulation. ठीक है, and that is the important of bulbourethral gland or bulbourethral secretions. Okay, is it clear, guys? Is it clear? Click on yes if it clear. चलिए, be active in class, guys. Please do thumbs on or click on yes. ठीक है, चलिए.
ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट गाइस। एंड गाइस, बायो का ऐसा हमारा तैयारी होना चाहिए, वी वांट टू रेडी फॉर बायो, लाइक हमें डबल नहीं, मतलब ज्यादा पढ़ने की या दिमाग को टेंशन देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। जस्ट वी वांट टू रिवाइज वंस, एंड ये सारी चीजें हमारे ध्यान में आना चाहिए। दैट्स वाई मैं थोड़ा इसको धीरे धीरे ले रहा हूं, स्लोली स्लोली हम चल रहे हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट नेक्स्ट ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द रेक्टल रीजन, ठीक है। जो रेक्टल रीजन रहेगा वहां पर ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंड इट नोन एज अ पेरिनियल ग्लैंड्स, ओके। एंड दिस पेरिनियल ग्लैंड नॉट present in human, that means it absent in human, it present in some animals like a rabbit, okay. And it important to attract uh, we can say opposite sex, ठीक है, फॉर द मेटिंग, ठीक है। एंड इट नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन, ठीक है। फिर भी यू वांट टू नो अबाउट द पेरिनियल और रेक्टल ग्लैंड, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट गाइस, सो व्हाट इज मीन बाय सीमन? सो सीमन is a simply sperm plus accessory reproductive fluids. We all discuss that is a 3 type of different fluids, ठीक है। 3 टाइप के फ्लूइड्स हमने यहाँ पर जो है डिस्कस किए हैं। वॉल्यूम ऑफ स्पर्म इन वन ejaculatory process, that is 3 to 4 ml, and this 3 to 4 ml or we can say this 3 to 4 ml, from this 3 to 4 ml 1 ml contain 20 to 120 million sperm, ठीक है। मिलियन स्पर्म इन पर ml, मतलब 1 ml के अंदर इतने मिलियन स्पर्म जो है उनका काउंट जो है वो रहने वाला है। एंड दिस कंप्लीट थिंग इज नोन एज द सीमन, उसे हम कंप्लीटली क्या कहते हैं? सीमन कहेंगे, ठीक है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट मींस डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म सेल, ठीक है, स्पर्म सेल का डेवलपमेंट। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स, दैट मीन टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म विथ द हेल्प ऑफ पेनिस, ठीक है। दैट द इंपॉर्टेंट ऑफ वी कैन से फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलिए गाइस, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज pH of seminal fluid is slightly alkaline, highly alkaline, slightly acidic, highly acidic. And I am launching poll for you guys, please answer fast. चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका। करेक्ट भावना, करेक्ट जेनवी, मांड्या, करेक्ट क्लास 12, यादगीर, करेक्ट जेनवी बेलगावी, करेक्ट जेनवी सांगली, YouTube guys, please answer. No one comment in chat box. Okay guys, so I'm end this poll. Okay, so I'm end this poll, and this is your result. Here maximum people choose an option A. Obviously option A is the correct option, okay. So we already discussed this thing, that is pH of seminal fluid is the alkaline, and pH of seminal fluid is कितना रहता है इसका pH? It is 7.4, ठीक है। कितना रहेगा? 7.4, and 7.4 is the alkaline value.
ठीक है, चलिए, दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. कमिंग टू द नेक्स्ट गाइस. सो नेक्स्ट थिंग इज द डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं. So there have some of disorder here. You can see first disorder is the sterility. Okay, first disorder is the sterility. Then what is meant by sterility? So sterility is inability of the sperm to fertilize egg. That means some person contain the sperm, okay, but the sperm have a no or we can say it have a defective sperm, and that's why it not able to fertilize egg. Okay, and that sterility contain a different we can say systems or different part. For example, oligospermia. Then what is mean by oligospermia? Oligospermia का मतलब क्या होता है guys? So in oligospermia you can see less than 20 million sperm. That means the number of sperm count is a low. ठीक है, number of sperm count is a low. उसका नंबर क्या रहेगा, कम रहेगा. In case of azoospermia there have absence of sperm. ठीक है, मतलब यहां पर क्या रहेगा, sperm बहुत ही कम रहेगा या absence रहेगा. Next, in case of defective sperm there have some defective sperm. For example, sperm का जो nature है वो बराबर से नहीं रहेगा. There have only cell, there have no tail, like that. ठीक है, so that thing is known as the defective sperm. So defective sperm also problematic. Why defective sperm problematic? Because it not able to travel from the penis to the uterus, or we can say fallopian tube, up to the fallopian tube, and that's why it is known as a defective sperm. And defective sperm, it also one of issue or it not able to fertilize egg. ठीक है, मतलब वो fertilize नहीं कर सकता egg को. Next is the impotence. ठीक है, then impotence actually is somehow temporary or some of psychological thing. इसे हम कह सकते हैं. So in impotence person or impotence problem, there have loss of erection of penis. ठीक है, and due to absence of erection there have no any transportation happen, no any copulation happen, no any sexual activity happen between male and female. ठीक है, चलिए, coming to the next part is the prostate cancer. Actually prostate cancer happen in a male. Okay, and it is a common malignant cancer which present in a male. Okay, malignant means where somehow we can say lump of cell get developed. ठीक है, मतलब यहां पर lump of cell जो है वो डेवलप होगा, lump of cell. Okay, that thing is known as a malignant. So you already know, I think, about the cancer. ठीक है, and this cancer happen in the prostate. मतलब ये कैंसर कहां पर हो रहा है, प्रोस्टेट में हो रहा है, and that's why it is known as a prostate cancer. Okay, and due to prostate cancer it not stimulate the development of testosterone. ठीक है, ये क्या करेगा, टेस्टोस्टेरॉन का जो है डेवलपमेंट को स्टिमुलेट नहीं करेगा. ठीक है, एंड यू ऑलरेडी नो प्रोस्टेटिक फ्लूइड हैव a 25 to 30% portion in the semen, and that's why it affect on semen proportion also. Okay, and that's why it is a one of problematic situation. And during this condition प्रोस्टेट जो है वो निकाला जाता है. डॉक्टर कट द प्रोस्टेट और रिमूव द प्रोस्टेट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, लम्स मींस देयर हैव एग्रीगेशन ऑफ सेल. ठीक है, लम्स का मतलब ये होता है एग्रीगेशन, वी कैन से. क्या हो गया, 1 minute गाइस. ओके, एग्रीगेशन. ओके, मतलब ऐसा जमा होना, दैट थिंग इज नोन एज द लम्स. ओके, ठीक है, दैट थिंग इज नोन एज अ लम्प. ठीक है, उसे हम कहते हैं लम्स. ओके, और इट आल्सो नोन एज मैलिग्नेंसी. मैलिग्नेंट कैंसर इज अ वन टाइप. ठीक है, ये एक टाइप रहता है. ठीक है, चलिए. ओके गाइस, सो व्हाट इज मीन बाय कैंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल अब थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसको.
प्लीज आंसर इन चैट। हाउ टू डिफाइन कैंसर, कैंसर को कैसे डिफाइन करोगे आप? तब लंप्स अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, कोई बता सकता है? प्लीज आंसर इन चैट बॉक्स इफ यू नो अबाउट इट। नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। यस, करेक्ट करेक्ट, जैनवी यादगीर, करेक्ट। सो कैंसर इज अ अनकंट्रोल division of cell. Okay, and that division is not, we can say, use the noble cell properties. जो नोबल सेल की प्रॉपर्टी रहेंगी, ठीक है, उसको वो यूज नहीं करता है। इट इज अनकंट्रोल, वी कैन से अनडायरेक्शनल डिवीजन, मतलब कहीं भी डिवीजन होते जा रहा है, होते जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट फॉर्म और एग्रीगेट द सेल, ठीक है, एंड दिस थिंग इट नोन एज अ लम्प्स। उसे हम क्या कहते हैं? लम्प्स कहते हैं, ठीक है गाइस। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द inguinal sorry, 1 minute. Okay, so next thing is the inguinal hernia. Then what is mean by inguinal hernia? So you can see this is a normal condition where you can see this is the intestine, this is the abdominal region, okay, this is a testicular scrotum, okay. So when inguinal hernia happen, at that time this intestine come in contact with the testis, and the intestine go toward or go inside the scrotum, okay, and this is known as the inguinal hernia. उसे हम क्या कहते हैं? inguinal hernia. Actually doctor operate this thing and doctor remove this intestinal part from the testis. testis से उसको remove किया जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं हम inguinal hernia. So this is a inguinal hernia into scrotum, and this thing is known as the inguinal hernia in the canal, okay. So how it happen, ठीक है, so you can see this is the inguinal ring, ठीक है, यहाँ पर inguinal ring रहेगा, इस inguinal ring से ये जो है वो नीचे उतरता है, ठीक है, so यही होता है हमारे inguinal hernia के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अ क्रिप्टोरचाइडिज्म, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट इन द लास्ट सेशन, ठीक है, क्रिप्टोरचाइडिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया है। सो व्हाट्स हैपन इन दिस प्रोसेस, वी डिस्कस अप टू द 7 मंथ, जब बेबी पेट में रहता है, व्हेन फीटस स्टे इन द वी कैन से यूटेरिन एरिया और यूटेरस, at that time up to the 7 month testis stay in the abdomen. testis कहां पर रहेगा? हमारे एब्डोमन के रहेगा, में रहेगा, हमारी इन द सेंस जो मेल है, ह्यूमन मेल, उसके एब्डोमन में रहेगा, एंड आफ्टर 7 मंथ इट गोइंग टूवर्ड द स्क्रोटम, ठीक है, उसके बाद ये कहां पर जाता है? स्क्रोटम के अंदर जाएगा। But in some children or in some fetus, it not go toward the scrotum and it remain in stomach, and that thing is known as a cryptorchidism, ठीक है, उसी को ही हम क्या कहेंगे? cryptorchidism कहेंगे। Then what is a factor behind it? So some of genetic factor and some of maternal health factor and some environmental factor responsible for it, ठीक है। सो 2% ऑफ जनरेशन और वी कैन से पीपल हैव अ क्रिप्टोरचाइडिज्म। अब उसके ऊपर इलाज क्या है? व्हाट इज अ क्यूर ऑन इट? सो डॉक्टर परफॉर्म वन ऑफ सर्जरी वेयर they remove the testis from the abdomen and it transfer to the we can say scrotum. scrotum में उसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, that thing is known as a cryptorchidism, ठीक है। You can see the diagram here, ठीक है। So it is a undescended testicle which present in a we can say abdomen site, okay. This is a inguinal canal, okay. This is a descendant or normal testicle, ठीक है, ये normal testicle रहेगा right here, this is a normal। चलिए, so guys what is we can say
why we want to descendant testicle again? Again, my question is it why is it not okay? That is undescendant testicle or cryptorchidism is a not okay. ठीक है, why it not okay? मतलब ये सही क्यों नहीं है? ठीक है, ऐसा रहना वो either it stay in the stomach or sorry not a stomach, stay in the abdomen or the scrotum. कोई बता सकता है why it want to scrotum only? स्क्रोटम में ही क्यों चाहिए हमें? ठीक है, is any issue if it stay in the abdomen? Please answer guys if you know about it. Correct, anonymous. Yes, correct Janvi. Okay, so if it stay in abdomen, it not we can say process to produce or we can say spermatids. ठीक है, that means it not perform a spermatogenesis. मतलब वो spermatogenesis को perform नहीं कर पाएगा due to temperature factor, and that's why it want to scrotum only. ठीक है guys, चलिए coming to the next is question, which of following condition can be seen in children? Impotence, prostate cancer, cryptorchidism, azoospermia. And I am launching poll for you guys. Please answer fast. चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका. Everyone want to answer it because question so easy. Correct Jidvi Belgavi, correct Jenny Mandya, correct Jenny Sangli, correct Yadgir Jenvi. Okay guys, so I am end this poll and this is your result. So maximum people choose an option C. Obviously it is correct option. ठीक है, so I think it not want to discuss this question answer because you already know about it. ठीक है, that is cryptorchidism. ठीक है, चलिए impotency, prostate cancer, azoospermia, this disease start it may start after puberty. मतलब ये puberty के बाद शुरू होने वाले disease रहेंगे. ठीक है, चलिए, और disorder रहेंगे, not a disease completely. चलिए next is a person of age 40. 1 minute guys. Okay, a person of age 40 with 2 children came to hospital with swollen scrotum sac with a pain. What is your opinion about his condition? He may suffering from cryptorchidism, inguinal hernia, impotence, kidney stone. I'm launching poll again, guys. Please answer fast. Correct, Jenvi Belgavi, correct, Jenvi Sangli, correct, Yadgir, correct, Jenvi Mandya.
Okay. Okay, so I am end this poll. Correct, Namma? And this is your result. Maximum people choose an option B. Obviously, it is correct option. ठीक है. चलिए. So it is the inguinal hernia. Okay, so cryptorchidism present in children. ठीक है. ये चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा. आफ्टर दैट डॉक्टर ऑपरेट इट. ठीक है, उसको ऑपरेट कर देंगे. नेक्स्ट impotency is a condition, or we can say it is a sterility sterile condition of human male का sterile condition ये रहेगा. Kidney stone, in kidney stone pain happen in abdomen. ठीक है, पेन कहां पर होता है किडनी स्टोन के केस में? एब्डोमेन के अंदर. दैट्स व्हाई ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. दिस टाइप क्वेश्चन इज नोन एज द अप्लाइड क्वेश्चन. इसे हम क्या कहते हैं? अप्लाइड क्वेश्चन. व्हाई वी इसको अप्लाइड क्वेश्चन क्यों कहते हैं? बिकॉज हियर नॉट थिंक यूज और आस्क डायरेक्टली. ठीक है, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पूछा गया है. उन्होंने आपको एक कंडीशन दिया है. ठीक है, एंड दैट कंडीशन वांट टू एनालाइज, एंड उसके बाद वी गोइंग टुवर्ड द आंसर. तभी हम आंसर की ओर जा सकते. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो आस्क इन द एग्जामिनेशन. ठीक है गाइज. ओके, so coming to the next guys, next thing is the female reproductive system. Today we just go through some of overview of female reproductive system, and from the next lesson we will going to in detail. So this is a complete female reproductive system on your screen. Okay, you can see this portion is known as a ovary. Ovary is important for जनरेशन ऑफ एग सेल. ठीक है, एग सेल के ये जरूरी होता है. दिस इज अ फिमरिया. फिमरिया इज अ वी कैन से लाइक सम हेयर लाइक थिंग. ओके, यहाँ पर ऐसा ऐसा दिख रहा है हमें, लाइक अ फनेल लाइक थिंग, एंड इट इम्पोर्टेंट टू रिसीव एग सेल. ठीक है, ये एग सेल को रिसीव करेगा. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, इट इज नोन एज अ फॉलिपियन ट्यूब. इसे हम कहेंगे फॉलिपियन ट्यूब. दिस थिंग इज अ फॉलिपियन ट्यूब. यू कैन सी हियर. This is a egg. This is a developing follicle. We will going to discuss how to develop complete follicle. Here you can see egg cell get discharged. Okay, and ये इस तरीके से इसका जर्नी होता है. This region is known as a fundus. Fundus region के अंदर क्या होगा? Fertilization process होगा. We will discuss it. Don't worry. ठीक है. This is a fundus of uterus. Okay, this portion is a fundus of uterus. This is a different ligaments. Okay, that means this ligament is known as ovarian ligament, and that's why it attached to the ovary. Okay, this is a round ligament. ये इस तरीके का ligament रहेगा. This is the broad ligament. ये यहाँ पर जो है कुछ broad ligament रहेगा. ठीक है guys, like this यहाँ पर. Okay, and this you can see this is a feather like, or we can say it is a wing like structure. Wing like structure हम देख रहे हैं, and it known as a mesometrium. ठीक है, इसे हम कहेंगे mesometrium. ठीक है. Next, this is a uterus. Uterus also known as a womb. Okay, and inside the uterus baby develop inside the uterus. Uterus is important for the menstrual cycle. This is a cervix region. Cervix region is opening of uterus. Okay, and it have a we can say ये थोड़ा सा कम रहता है. There have little bit space in cervix. This is vaginal way, or we can say vaginal tube. ठीक है, और vagina. ठीक है, इसको कहते हैं. एंड आउटर पोर्शन इज नोन एज अ उल्वा. ठीक है, जो आउटर पोर्शन रहेगा दैट इज अ उल्वा. ओके गाइज, so this is a complete structure of female reproductive part. We will discuss it in detail in next session. Okay, you can see again यहाँ पर सारी चीजें और दी गई है. यूटेरस, वजाइना, mons pubis. हाँ, this is a part portion of external genitalia. We will going to discuss about it. Don't worry about the external genitalia. That is mons pubis, vestibule, hymen, clitoris. Okay, so for today up to this slide only.
from tomorrow, or we can say from next lecture. आई थिंक टुमारो का हॉलीडे रह सकता है, आई डोंट नो, ठीक है, नोटिस प्रोवाइड किया जाएगा. सो आई एम लॉन्चिंग पोल फॉर एनपीएस, प्लीज आंसर इट. ओके, एंड यू कैन लीव फॉर अ डे. ठीक है, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ इश्यू, एनी टाइप ऑफ डाउट, यू कैन आस्क. Okay then guys, goodbye to all. Stay happy, stay healthy. Happy Dashera to all guys from my side. Okay साइली, कोई इशू नहीं साइली, आप अटेंड करो, रेगुलर अटेंड करो. थैंक यू जैनवी यादगीर, थैंक यू जैनवी मांड्या. सायली रोज अटेंड कर क्लास, होऊन जाईल कव्हर तुझं. ठीक आहे देन, गुड बाय टू ऑल गाइज. एंड सायली, बाकी लोग भी जो हो गए ना, अदर पीपल्स जो आपके फ्रेंड्स वगैरह है, उनको भी अटेंड करने को लगाओ, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सायली, हम सिर्फ बुक्स का ही नहीं यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वी ऑल्सो डिस्कस जो बुक्स के बाहर का है, नीट के लेवल का है, वो सारा चीजें डिस्कस करते हैं. ठीक है, चलिए. ठीक है, गुड बाय टू ऑल गाइज.